Students, we are on the second question of the exercise, which is about the comprehension questions. Let's see what is the first question. Why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her? Student, here the writer is asking कि नर्स राहिला ने हिरा की बहन को क्यों पास बुला के कहा था कि आप हिरा से बात करने की कोशिश करें. So we can answer this question in this way, that nurse asked Hira's sister to come and talk to her because she thought, Rahila thought that the voice of the near and dear ones might activate her nearly dead neurons. दिस मीन्स कि उसने अब उसकी बहन को इसलिए बुलाया था कि उसके अपनों की आवाज़, क्या पता उसकी बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं या बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अपनों की आवाज़ को पहचान के शायद वो एक्टिवेट हो जाए और हिरा जो है ना वो थोड़ी मूवमेंट शो करे. आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर. नाउ वी आर ऑन सेकेंड क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. व्हाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? Now here the writer is asking that why did the nurse Rahila disagree with the doctor's point of view. और सबसे पहले डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? डॉक्टर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि शी इज़ अ होपलेस केस और अब ये दोबारा चलने के काबिल नहीं है क्योंकि उसका एक्सीडेंट ही कुछ इस तरह से हुआ था. सो वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस वे, दैट नर्स disagree with the doctor point of view because she thought that leaving a patient unattended was not right. A chance should be given to the patient. She thought that her full attention could make her patient recover. The patient should be given a second chance or a chance to recover. I hope I answered the question. Students, we are on the third question. Let's see what is the third question is. Why did the nurse ask herself the question, was it worthwhile to oppose and fight the decision of a senior and more qualified surgeon? Here, students, writer is asking you that क्यों जो है नर्स राहिला ने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा कि क्या ये वर्दी होगा कि मैं अपने डिसीजन पे फाइट करूं और अपने सीनियर्स के ख़िलाफ़, क्योंकि सीनियर्स तो डॉक्टर्स हैं, उन्हें ज़्यादा पता है, तो क्या ये सही होगा कि मैं अपने सीनियर्स के ख़िलाफ़ जाऊं? So we can answer this thing in this way, this question in this way. The nurse wanted to save the life of the girl who was declared as a hopeless case by the seniors doctors. The nurse wanted to give the patient a chance. She went against the decision of the authority and risked her job. But at the same time, she was in a confused state of mind and asked herself it was worthwhile to oppose and fight the decision of a senior and more qualified surgeons. Students, ये thought आई क्यों? ये थॉट इसलिए आई थी क्योंकि एट द वेरी स्टार्ट हिरा कोई रिकवरी शो नहीं कर रही थी, इसलिए नर्स को लगा कि क्या मैं अपना डिसीजन या मैं अपना स्टैंड अपने सीनियर्स के सामने प्रूव भी कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी. सो स्टूडेंट्स, आई होप आई आंसर द क्वेश्चन. वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द नर्स इन द स्टोरी. Student, here the writer is asking about the qualities of Rahila as a nurse. So we can answer this question in this way, that the nurse in the story is very sincere to her job and towards her patient. She is kind-hearted and caring to such an extent that she feels the pain of injured people with severe disorder quite well. She is very intelligent as well. She does her best to save the life of a girl who is declared as a hopeless case by the senior doctors. She is hopeful and optimistic as well. She risks her own job to save the life of the girl. She is very proud of her profession. सो स्टूडेंट्स, हम इजीली ये कह सकते हैं कि नर्स राहिला जो हैं, एक तो वो अपनी जॉब के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, दूसरा उन्हें अपने मरीज़ों का, जो वहाँ पे उनकी वार्ड में जो मरीज़ आते हैं, उनका दुख और दर्द फील होता है, और वो इतनी इंथुजियास्टिक और इतनी पैशनेट हैं कि उनकी अंदर से जो इनर वॉइस है वो उन्हें होप दिलाती है कि नहीं, इतना सीरियस पेशेंट भी सही हो जाएगा, ये भी रिकवर कर जाएगा. मोर she has very fine personality with hope and optimistic nature. And finally, she is proud of her profession as a nurse. वो अपने नर्स होने पे भी फ़ख्र महसूस करती हैं. I hope I answered the question. Students, we are on the last comprehension question, and the last question is, why did the nurse says where there is a will, there is a way?
आखिरी क्वेश्चन में राइटर हमसे ये डिमांड करता है कि आखिर में क्यों नर्स राहीला ये प्रोवर्ब यूज करती हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इसका क्या रीजन है? सो वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस वे दैट नर्स सेड इट बिकॉज शी वाज डिटरमिन्ड टू सेव द लाइफ ऑफ अ गर्ल. In spite of the fact that her senior doctor asked her to leave the hopeless case, her sincerity and determination brought her success at the end. So हम कह सकते हैं क्योंकि there is a will, there is a way, where there is a will, there is a way. तो जहाँ पे will होती है वहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकल आता है. It means कि नर्स राहीला को होप थी, तो उस होप ने ही कोई रास्ता दिखाया और आखिरकार उस होप की वजह से उनकी पेशेंट जो हिरा थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और अपने कदमों पे चलने लगी. आई होप आई आंसर द क्वेश्चन. आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे और आपको इस टॉपिक की, इस चैप्टर की ज़्यादा समझ आई होगी. Let's move to the next question.